Today we will new topic, that is linear inequation. लीनियर इक्वेशंस को हम स्टार्ट करेंगे. कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कल वाली वीडियो अपलोड नहीं हो पाई. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. लीनियर इक्वेशंस, आपने इक्वेशंस तो आपने पढ़ी हैं पहले इन प्रीवियस क्लासेस. x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 और आप इसको सॉल्व करते हैं कि x या x माइनस 2 इज इक्वल टू 4. इस तरह की क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, x इक्वल टू 4 प्लस 2 एंड यू विल गेट x इक्वल टू 6. मीन्स आप कहते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 4. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? मीन्स देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन which satisfy this equation, so that value is x equal to 6. तो in such a way हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन होता था, लेफ्ट में और राइट में कुछ वैल्यू होती थी. उससे पहले हमने एक्सप्रेशन को जनरेट करना सीखा. 7th क्लास में हमने लिखा कि x प्लस 2 इस टाइप के दिस इज एन एक्सप्रेशन, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज एन एक्सप्रेशन. फिर हमने इक्वल टू 0 या इक्वल टू समथिंग जो भी वैल्यू आपने लिखी, इक्वल टू 4 वगैरह, तो आपने उससे एक इक्वेशन जनरेट की. उसमें इनइक्वालिटी, उसमें इक्वालिटी का साइन था, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ वैल्यू थी. बट इन +1 क्लास वी विल लर्न अबाउट द इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस. इनइक्वेशंस मींस देयर इज नो साइन ऑफ इक्वालिटी, देयर मे बी द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी साइन मींस अगर आपको किसी तरह की इक्वेशन लिखी हो, x plus 2 greater than 4. Second is x plus 3 less than 6. इस टाइप से हो सकता है कि आपको ये लिखा हो इक्वेशन में x plus 4 greater than equal to 4 या x plus 3 less than equal to 7. इस तरह की इक्वेशन, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर द इनइक्वेशंस. क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटीज है. यहाँ लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए. लेफ्ट साइड वैल्यू शुड बी लेस देन द 6, लेफ्ट साइड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. ये साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये ग्रेटर भी हो सकता है और आपका इक्वल भी हो सकता है. अब ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? लेस देन और इक्वल टू दोनों कंडीशंस को इंडिकेट कर रहा है. तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को हम अपने +1 क्लास में एनालाइज करेंगे और हम इसको स्टडी करेंगे. इससे पहले कुछ कंडीशंस ओके स्टूडेंट. तो इस टाइप से हम इनइक्वालिटीज को, इनइक्वेशंस को एनालाइज करते हैं. अब हमने सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिया. फर्स्ट एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि x plus 2 greater than 4. We have to solve this inequation. We have to solve this inequation. Solve करने का मीनिंग क्या हुआ? We have to find all the value of x which satisfy this inequation. This is your linear inequation. And we have to find the value of all x's which satisfy this equation. अब यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन हो सकती है कि जैसे हमने कोई कंडीशन नहीं दी या कंडीशन वे दे भी दे तो हम कह दें कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. x सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करता है. आपको कोई भी रियल नंबर हो सकता है. दूसरी कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि आपको वो x की वो वैल्यू निकालनी है जो आपको नेचुरल नंबर से बिलोंग करे. एक एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे. पहले हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर फॉर दिस इनइक्वेशंस. मींस वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई दिस इनइक्वेशन एंड दोस वैल्यू शुड बी ऑल रियल वैल्यूज. तो सारी की सारी वैल्यू हमारी रियल वैल्यू होनी चाहिए. तो इसको भी हमने जैसे ट्रांसपोज रूल की तरह सॉल्व किया. x greater than 4 minus 2, x greater than 2. So these will be the solution of our given linear inequation.
if we want to represent this graphically, there is a 0, 1, 2 on number line system, 3, 4, and you know that this is a -1, -2, -3, and -4, and so on. There will be minus infinity, and that will be the plus infinity. Now, our solution is x greater than 2. X greater than 2 means 2 is here, and we have to take all the real value which are greater than 2. But there is no sign of equality. There is no sign of inequality. So we have to take all the value of x which are greater than 2, means there should be all the value which lie on this line. अगर हम इसको नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करें तो यानी कि आपको 2 से बड़े वाली सारी की सारी वैल्यू को इंक्लूड कर लेना, बट देयर शुड बी 2 शुड नॉट बी इंक्लूडेड. 2 इंक्लूड नहीं करना, तो ग्राफिकली अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पे एक होल सर्कल लगा देते हैं. दिस इज द होल सर्कल. इट इज इंडिकेटिंग दैट all number greater than 2 are lying on this solution, but 2 is not included. 2 is not included. 2 से बड़ा जस्ट जो भी रियल नंबर आएगा, तो 2 से बड़ा 2.000001 ये नंबर ही क्यों ना हो, 2.1 ही क्यों ना हो, 2.000001 ही क्यों ना हो, तो कोई भी नंबर आएगा जो 2 से बड़ा होगा, that will lie in the solution of this linear inequation, but 2 will not lie. ओके स्टूडेंट, अब ये आपको जो 2 लाई नहीं करता उस पे किस तरह का आपको रिप्रेजेंट करते टाइम कैसा सर्कल लगाना है, होलो सर्कल. मींस 2 पे होल सर्कल और बाकी सबको डार्क कर देना है. अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी होता, वी आर टेकिंग सेम एग्जांपल, x + 2 greater than equal to 4, इस तरह का एग्जांपल होता, then what will do, x greater than equal to 2, this will be the solution. If we want to represent this solution on the number line, we will represent in such a way that 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, and -4. X is greater than equal to 2. It means that we have to take all the value of x, all real value x, because in the starting of our question, it is given that x belongs to real number. We have to take all the real value of x. आपको सारी की सारी रियल वैल्यू लेनी है. वी हैव टू टेक x greater than equal to 2, means 2 is also included, so we will make a dark circle on the 2 and all value we have to darken this line because there is minus infinity and there is infinity, so we have to make a dark circle and this we have to draw in such a way that अब लास्ट में तो आपको कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि आपका बड़ी वैल्यू क्या आएगी. 2 से बड़ी सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी इसमें. 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.001, and 2 is also included, all real value. So in this way, if we want to, now second question is, अब ये तो आपका सॉल्यूशन आया, हमने इस वे में लिखा, इनइक्वालिटीज के वे में लिखा, इसको हमने ग्राफिकल वे में लिखा. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को हमने इनइक्वालिटी के वे में लिखा सॉल्यूशन और ग्राफिकल वे में लिखा. नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या अब हम इस सॉल्यूशन को हम सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट रिलेशन पढ़ा था जो, एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ सेट, व्हाट विल बी द आंसर. तो सेट की फॉर्म में आंसर क्या होगा, x greater than 2. इट मींस दैट सॉल्यूशन विल बी, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी 2 to infinity. मींस सारी की सारी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो और इंफिनिटी तक हो, तो 2 पे ओपन ब्रैकेट, वी हैव टू टेक ओपन ब्रैकेट ऑन द 2. फिर अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहें 2 to infinity, तो इंफिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट आनी है. यहाँ पे क्या आएगा, इक्वलिटी का साइन भी है, तो दिस विल बी द क्लोज ब्रैकेट. तो ये सेट की फॉर्म में अगर आपको इस सॉल्यूशंस को लिखना है, यू कैन राइट इन दिस वे. These are the set forms. Means we have to take all the value of 2, all the value which are greater than or equal to 2. तो ये क्लोज ब्रैकेट, जहां आपको 2 इंक्लूड नहीं करना, दैट विल बी द ओपन ब्रैकेट. तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को लिख सकते हैं. अभी तक हमने 2 टाइप की इन इक्वेशंस पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन 4, नेक्स्ट में लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4,
Now we will discuss another type of inequation in which left side is less than 4. So we are changing this question, same question. Question number 3. The inequalities of the type is x minus 4 less than 2, या यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे -2, किसी वे में भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। अब आपको ट्रांसपोज करना है, 4 को ट्रांसपोज कीजिए, व्हाट यू विल गेट x लेस देन -2 -4, you will get x less than -6. Means you have to take all the value of x which are less than -6. If you want to draw a graphical solution of this linear inequalities, that graphical solution will be 0 1 2 3. In the same negative direction, this will be -1 -2 -3 -4 -5 and -6. Means you have to take all the value of x, all the real value of x which are less than -6. मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू आपकी इंक्लूड हो वो -6 से छोटी वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे होलो सर्कल डाल देंगे आप -6 में और बाकी लाइंस को डार्कन कर देंगे। दैट इज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इनइक्वेशंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट if we want to make this solution in a set form, what will be the solution? The solution will be, this is the graphical solution and this is the solution in the form of inequalities. Now third way to represent this solution in a set form, that will be -infinity to -6 and there should be the open bracket. Because there is no sign of equality, so we will take open bracket toward the -6. This will be the solution of this linear inequation. So in this way we can find out all the solution of our linear inequations. Now अब इसके बाद एक एक स्टेप करके हम इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उन सब में x belongs to real number, x belongs to real number. Now next part, if we say that in the same question, if we impose a condition and condition is that x belongs to all natural number, so what will be the solution of this given linear inequations? What will be the linear solution of this linear inequation if x belongs to all natural number? And we know that the solution are x less than -6, we have to take all the value which are less than -6. क्या -6 से छोटी वैल्यू में कभी कोई नेचुरल नंबर आता है? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर तो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप कंडीशन इंपोज कर दी गई है, सपोज कीजिए दिस वन इज योर थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है एंड दिस वन इज योर सेकंड कंडीशन. Condition is that x belongs to real, x belongs to natural number. We have to take all the value in which x belongs to natural number. अब क्या -6 से छोटे में कभी कोई नेचुरल नंबर आता है? There is no natural number which are less than -6. It means that there is no solution for this condition. इस कंडीशन के लिए आपका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा इस इनइक्वालिटीज का. Got it? Now next, third part. If we impose the third condition, now we are changing our condition and we are trying to find out the solution of this inequation depending on the condition. If we impose the condition x belongs to integers, means we have to take all the value which belongs to integer. आप सोचिए -6 से छोटा, you have to take all the value which x is less than -6. We have to take all the value which are less than -6 and that value should be integer. Condition is that all that value should be integer. तो -6 से छोटा इंटीजर कौन आएगा? -7. उससे छोटा इंटीजर -8 -9 -10. इस तरह से all these value will be
द सॉल्यूशन। इस तरह की वैल्यूज आपका सॉल्यूशन चाहिए। आप इसका एक सेट बना दीजिए, डॉट 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 करके एक सेट बना देंगे। आप सारी वैल्यू तो लिख नहीं सकते, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। हमें वो नेगेटिव इंटीजर ले लेने हैं जो -6 से छोटे हैं। क्या -6 बोलेंगे? नो, वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ -6 बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ इक्वलिटी। This is your third condition. In such a way, if condition is imposed while calculating the solution of inequalities, while calculating the solution of inequations, we have to observe our condition. So what value we have to take? Whether we have to take the value of x as a real number, whether we have to take the solution as a natural number, whether we have to take solution as a integers. So in such a way, we can find out all these conditions and answer of our question. This is your basic concept with the help of which you can do all these questions. Now next concept related to inequalities is that अब एक नया concept हम इसमें करने वाले हैं, फिर इसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. The question is that in case of linear equation, if you take a value for greater than 2, if you are multiplying with minus sign both sides, what will be the inequalities you have to observe? So what value is greater between -4 and -2? You are just multiplying minus sign with this equation. This is true. 4 is greater than 2 is true. A minus sign both side apply किया, -4 is greater than -2. No, it's not true. अब यहां से आपका -2 is greater than, ये कंडीशन आपकी, ये ट्रू स्टेटमेंट होगी आपके लिए. It means that while applying the minus sign on this inequation, तो आपकी inequalities का साइन भी चेंज हो रहा है. यहाँ आपको ग्रेटर था तो ये लेस हो रहा है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके. अब ये तो हमने नंबर लिया, इस नंबर को लेना ऑब्जर्व करना भी इजी था. अगर आप सिंपली आपसे पूछ लिया जाए कि x ग्रेटर देन -2 और हम कह दें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय माइनस या नेगेटिव साइन, माइनस साइन, व्हाट यू विल गेट -x, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इक्वलिटी इनइक्वलिटीज आपकी चेंज होनी है. यहाँ पे ग्रेटर देन था, दिस विल बिकम लेस देन, और यहाँ माइनस अप्लाई करेंगे, दैट विल बी +2. तो इस तरह से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है अभी जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 16.1. 6.1 एंड यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस. मींस आपको सॉल्यूशन बताने हैं. अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस इंपोज कर दी गई हैं एक्सरसाइज 6.1 में. 24 और फर्स्ट क्वेश्चन इज exercise 6.1 NCERT. Condition is you have to solve 24x less than 100. In the first part, x is a natural number. अब आपको x की वैल्यू को सोल्व करना है. कब सोल्व करना है? When x is natural number. नेचुरल नंबर आप इस तरह से लीजिए या नोटेशन लीजिए. x is a natural number. आपने इसको सोल्व किया तो x लेस देन 100/24. ओके, अब इसको रिड्यूस कर दीजिए रिड्यूस फॉर्म में. व्हाट यू विल गेट? x लेस देन 25/6. 4 पे आपने कट कर दिया. अब यहां से ये वैल्यू क्या होगी जब इसको डिवाइड करोगे? अगर डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो x लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, 4.1, आगे जो भी डेसिमल जाना है, दिस विल बी 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू.
हमें इससे कोई लेना देना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी आएगी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल भी पाओगे कि वो रेशनल नंबर होंगे आपके लिए आपके क्वेश्चन में। सो यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यू ऑफ x which are less than 4.1 and x would be natural number। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि 4 से छोटी कोई भी वैल्यू आ जाए और वो 4 से छोटी वैल्यू, देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वैसे 4 से छोटी 4.1 से छोटी वैल्यू तो बहुत सारे नंबर होंगे, बट यू हैव टू टेक ओनली नेचुरल नंबर। मींस 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से, 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर में कौन आएगा, 4 विल आल्सो इंक्लूड, 2 विल इंक्लूड, 1 तो 0 तो नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे 3 लगा लेते हैं, दिस इज 3 and 4 5। here our number is 4.1, we have to take all the value which are less than 4.1 and that should be the natural number 1 2 3 and 4 will also include। So solution of our set will be 1 2 3 and 4। This is solution of your first part. In second part, condition is different. Condition is that x is a integer. Now we are changing our condition. In the second part, condition is that when x is a integer, means x belongs to, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं x belongs to integer। बाकी सब तो आपको सेम सॉल्व करना है, बट सॉल्यूशन विल बी, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। ये आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या रहेगा, when x belongs to integer। अब आपको 4.1 से छोटी वो सारी वैल्यू लेनी है जिसमें इंटीजर लाई करते हैं। तो 4.1 से छोटी वैल्यू में 4 3 2 1 0 इज आल्सो इंटीजर, -1 -2 -3 -4 and all the value which are in the negative direction या negative integer, all negative integer will be included। means solution will be, अब सॉल्यूशंस के सेट में आपके क्या क्या वैल्यू होंगी, ये सारी की सारी वैल्यू तो रहेंगी आपकी 0 1 2 3 4 और उसके साथ साथ आपके क्या रहेंगे, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। हमने यूनियन डाल दिया यहाँ पे, यूनियन आप लिख लीजिए ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो सॉल्यूशन को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या दूसरे फॉर्मेट में आप अगर इसको लिखना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में कि x इज एन इंटीजर, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 यूनियन x such that x belongs to negative integers। in this way you can write in this way, as you know that this is your set builder form from the first chapter of set। so in this way you can solve this question and we will discuss the next question second, that is the same part, बस में थोड़ा सा माइनस का है, तो इस वजह से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। वो कंडीशंस को ध्यान रखना आपको, इनइक्वालिटीज के केस में यू हैव टू ऑब्जर्व योर कंडीशंस कि आपको क्या कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इज दैट सॉल्व -12x less than 30। you have to solve this। -x when x is a natural number and x is an integer, you have to solve this। अब ध्यान देना आपको, ये -12 है, x अगर आप इस 12 को नीचे लेके जाते हैं इनइक्वालिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला if there is -9। अगर आप -9 को इधर लेके जा रहे हैं, this is same as you are multiplying both side with माइनस साइन। आप माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए या माइनस साइन को ट्रांसपोज कीजिए, बोथ आर सेम थिंग। जैसे हमने लिखा आपके लिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन भी समझाया था ऐसा ही कि x -x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे -x लेस देन 2। इफ यू वांट टू ट्रांसपोज दिस माइनस साइन इन द राइट साइड, तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी है, दैट विल बी द आंसर। आप इसको इस तरह इस वे में चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड विद माइनस साइन, अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं x इज पॉजिटिव, तो भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज होकर -2 आएगी।
आप कैसे बोलिए, या तो बोलिए कि आप इसको वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद माइनस साइन, या बोलिए कि हम माइनस साइन को ट्रांसपोज कर रहे हैं. इन बोथ केसेस इनइक्वालिटी विल बी चेंज. So in the same way, in your question, if you want to take the 12, if you want to transpose the 12, there is no problem. If you want to transpose minus 12, there should be change in inequality. So what will be the change? And change will be, if we are putting here minus sign, and this will be the greater, change into the greater sign. So in this way, this will become x greater than, अब इसको आप reduce कर लीजिए, what you will get, value you will get minus 5/2. ओके, हमारी स्टेटमेंट में हमने यहाँ लेस देन लिया है, हो सकता है एनसीईआरटी में ग्रेटर देन हो, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हमें क्वेश्चन को समझना है एंड वी हैव टू अप्लाई द कंडीशंस. तो x greater than minus 5/2 and x would be greater than minus 2.5. But first condition is that x would be integer. X would be integer means first condition that x belongs to is a natural number. X belongs to natural number. If x belongs to natural number, we have to take all the natural number which are greater than minus 2.5. तो minus 2.5 से जो greater है, minus 2.5 से greater तो सारी की सारी natural number है. अब वे ग्राफिकल, अगर if you want to draw the graphical representation, -1, -2, -3, -4, here will be the -2.5, all natural number. A natural number start from the 1, 2, 3, 4, 5. So solution will be the set. Solution set क्या रहेगा आपके लिए? All x such that x belongs to natural number, all natural number. If condition is given, x belongs to integer, z is denoted by integer, we have to take all the value which are greater than minus 2.5 and that should be the integer. What will the solution set? Solution set will be equal to, means there will be all integers, इंटीजर तो सारे रह नहीं है, उसके बाद माइनस 2.5 से बड़े वाला वैल्यू. अब दिस पॉइंट इज माइनस 2.5, माइनस 2.5 से बड़ा वैल्यू कौन आएगा? ये इंटीजर रहेगा. दिस वन इज आल्सो इंटीजर, मींस -2, -1 and 0 and all the value 1, 2, 3 and all positive integers. So this will be the solution. If condition is given, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हम अपनी तरफ से ले रहे हैं कि x belongs to all real number. The third condition is such that x belongs to all real number. What will be the solution set? So solution set will be अब ये solution set बनाने का मीनिंग क्या? आप इसको रियल नंबर की जब बात आती है तो आप उसको इंटरवल की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो. इंटरवल की फॉर्म में आपको क्या बनाना है? सॉल्यूशन -2.5 से सारी बड़ी वैल्यू, यू हैव टू टेक ऑल वैल्यू which are greater than -2.5. means you can take -2.5 but there is no sign of equality, so we will take open bracket up to infinity. This will be the solution when condition is that x should be real number. In this way we can solve all these questions. So this is simple and you have to practice your question from the exercise 6.1 1 to 16 question. All questions are same. अगर कुछ टाइम बचता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. हेलो किशन सर, 10 minutes are left. हेलो Hello सर. sir, 10 minutes are left. Okay sir, last question is that after that we can stop our videos. Next question we will discuss is that this is our 7th question. 3 into
x minus 1 less than equal to 2 into x minus 3. We have to solve this inequations for all real x. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि for all real x means x belongs to real number. We have to take all the solution of this inequation which belongs to a real number. आपको सारे के सारे रियल नंबर से कंडीशन में आपको यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो कि x belongs to all real number. 3x minus 3 less than equal to 2x minus 6. From here 3x minus 2x less than minus 6 and plus 3. So this will become x less than equal to minus 3. आप तो अब हमारा माइनस का कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमने माइनस को ट्रांसपोज किया हो या माइनस से मल्टीप्लाई किया हो, तो देयर इज नो इशू ऑफ माइनस. तो इनइक्वलिटीज पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इनइक्वलिटीज इस वे में रहेगी. कंडीशन हमारी वही है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर and we have to make the solution. What will be the solution? Solution will be the solution? We have to take all the values which are less than minus 3, means minus infinity to minus 3 and there is close bracket, there should be open bracket. Infinity पे तो हमेशा open bracket आता है, ये तो आपको पता है, but there is a sign of equality, so we will take close bracket. This will be the solution set for our inequalities in which x belongs to real number. This is our solution of this inequality. अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करनी है तो यू कैन ड्रॉ इन दिस वे 0 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Up we have to take all the value which are less than minus 3 and there should be equal to minus 3. Minus 3 से सारी की सारी छोटी वैल्यू आपको ले लेनी है. यहाँ पे minus 5 minus 6 minus infinity to infinity. आपने जो पोर्शन है वो डार्क कर देना है, और क्योंकि इक्वलिटी का साइन है माइनस 3 को भी सर्कल को डार्क कर देना है. So this is a graphical representation of solution. In this way you can try all these questions. Simple question है, बस माइनस का ध्यान रखना, जहाँ पे माइनस को ट्रांसपोज करना है इनइक्वालिटीज को आपको चेंज कर देना है. Okay student, in the next exercise we will represent the inequations या inequalities graphically in 2 dimensions. 6.2 में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें हम इन इक्वेशंस को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे. एक्चुअली ये 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन आपके लिए, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है. Tenth question is that x by 3 greater than x by 2 plus 1. You have to solve this inequation. So condition is same, x belongs to real number. इसको इधर ले आइए, x minus 3 minus x by 2 greater than 1 and solve this taking in LCM. After taking the LCM you will get 6 will be the LCM. 2x minus 3x greater than 1 cross multiply and you will get minus x by 6 greater than 1 and minus x greater than 6 and find the value of x. Here is minus x, we have to find the value of x. So minus sign से आप multiply कर दीजिए, you will get x less than minus 6. यहाँ x belongs to real number. Condition is that x belongs to real number. इससे this one. So this is your 10th question, and we have to write the solution set in set form. Solution will be
all value of x which belongs to real number and which are less than minus 6. So this will be minus infinity to minus 6. So this will be your answer. In the same way, from 1 to 16 question, you will try yourself. And next question, in the next period, we will discuss. Okay, students. हेलो कर दिया